Hi viewers, you are watching EnglishVocabBuilder.com. Viewers, this is lecture number 4, Pakistan and World Affairs Important MCQs, which are very helpful for our competitive exams, tests, etc. like CT, PST, NTS. So let's see and discuss one by one. So the first one MCQ is when was the state of Swat included in Pakistan? इसका मतलब ये हुआ कि स्वात का स्टेट पाकिस्तान में कब शामिल किया गया. So there are four options A, B, C, D. But the correct answer for this question is 1969. So let's see second number of MCQ. The British Act of 1935 consisted of how many sections? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये कह रहा है हमें कि द ब्रिटिश का जो एक्ट था 1935 का जो पाकिस्तान ने फॉलो किया था टू टिल 1956 इसमें कितने हिस्से थे सो इसके कितने पार्ट्स थे ठीक है सो देयर आर फोर ऑप्शन द फर्स्ट ऑप्शन इज 320 the second option is 321 the C number option is 322 and the D number option is 323 but the correct answer for this question is 321 sections were there consisted in the British Act of 1935 321 sections are there in the act of 1935. So let's see third number of MCQ. The US ambassador in Pakistan was Stephen Cohen. B number George Hampton and the option C Sergeant Brody Nichols and the option D Fool H.E. Allen. So the fourth number yani D number is the correct answer for this question. Paul H.E. Allen was the US ambassador in Pakistan. Fourth number for here, first person appointed is head of the Pakistani delegation to the United Nations on 13 September 1947. So the A number option is Begum Rana Liaquat Ali Khan, B number Mr. Tasadiq Hussain, and C number Miss Fatma Jinnah, and D number Rana Hussain. But the correct answer is B, Mr. Tasadiq Hussain. Tasadiq Hussain was the head of the Pakistani delegation in the United Nations. Was appointed on 13 September 1947. So let's see fifth number of MCQ. Here you can see fifth number of MCQ. In which province have longest coastline? कौन सी प्रोविंस में सबसे ज़्यादा जो कोस्टलाइन है यानी सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन कौन सी प्रोविंस में है सो ए ऑप्शन सिंध बी ऑप्शन बलूचिस्तान एंड सी ऑप्शन पंजाब डी ऑप्शन KPK बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी बलूचिस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन है ठीक है 6 नंबर पर देखते हैं नेम द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ पाकिस्तान विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन सिंस लॉन्ग पीरियड ऑप्शन ए होजक ऑप्शन बी कचूरी ऑप्शन सी लुवारी पास ऑप्शन डी शंदूर पास द लुवारी पास इज द करेक्ट आंसर सो लेट्स सी So let's see 7 number of MCQ. Which political party launched an offensive against Ziaul Haq? So the first A option is Muslim League, B PPP, C Awami Party, and D Qaf League. So the PPP party was launched in offensively in the against of Mr. Ziaul Haq.
because when Mr. Bhattu resigned from the ambassador post and came to Pakistan and launched a political party and offensively and against of Ziaul Haq. So let's see 8 number. When third martial law was lifted on, third martial law कब lift हुआ था? So A option 31 December 1985, 30 September 1985 and 25 October 1985, and D number option है 25 October 1985, but the correct answer is 30. The correct answer is A, 31 December 1985. So let's see. Which country declared in 2007 that it will establish 8 nuclear power plants in Pakistan? A option China, B Russia, C USA and D UK. The China is the correct answer for this question because China was declared in 2007 that China will establish 8 nuclear power plants in Pakistan. So let's see 10 number MCQ. Name of the president who wrote the book Foreign Policy of Pakistan. यहाँ पे ए ऑप्शन है जनरल अयूब खान, बी है इशाक खान और सी नंबर है जेड ए बट्टू यानी मिस्टर जुल्फ़िकार अली बट्टू एंड डी नंबर है जनरल मोशरफ। ज़ियाउल हक सॉरी जुल्फ़िकार अली बट्टू ने ये फॉरेन पॉलिसी का एक बुक जो है ना लिखा था। This is the correct answer for this question because the Zulfiqar Ali Bhutto was the foreign minister of Pakistan. Pakistan foreign policy, a historical analysis was written by option A, B, C and D. But the correct answer is option A. Pakistan faced sanctions under the First Amendments in 1992 by Britain, USA, Russia, India. The correct answer is USA. Okay. So let's see another slide. First president of Pakistan who visited Bosnia Herzegovina. So option A, B, C, D. Farooq Loghari, Ishaq Khan, Nawaz Sharif and General Musharraf. So General Musharraf was the first president who visited to Bosnia Herzegovina. Okay. So let's see a U-turn came in foreign policy of Pakistan after the world launched war against terrorism in 2001, 2002, 2003 and D option 2004. But the correct answer for this question is 2001. So Kargil issue was the main cause of war between Pakistan and India in 1999, and war was stopped by intervention of USA, China, Russia and none of these. So the correct answer for this question is USA. When America declared Pakistan as a frontline state against terrorism war. So 2001, 2000 and 2001, 2003 and D number 2004. But America declared Pakistan as a frontline state against terrorism war in 2001. 2001 में अमेरिका ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था as a front line state against terrorism. So let's see another slide. Where SARS conference 2016 was held. There are 4 options. The first one is Pakistan, A Pakistan, B India and C Sri Lanka. Fourth one is D China.
So the mm, SARS conference of 2016 was held in Pakistan. So this is the correct answer for this question. SARS का जो पहला कॉन्फ्रेंस था, पहला नहीं यानी 2016 का जो कॉन्फ्रेंस था वो पाकिस्तान में हुआ था। और SARS का मतलब ये है कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें 8 मेंबर्स है टोटल। So let's see 20 number of MCQ. Who was Nurul Amin? यानी नूरुल अमीन कौन था? ए ऑप्शन में है फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बी ऑप्शन में है फार्मर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, एंड सी ऑप्शन में है फार्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान, एंड डी में है फार्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो द डी आंसर इज करेक्ट, यानी डी नंबर जो है फार्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नूरुल अमीन पाकिस्तान का फार्मर वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है। सो लेट्स सी। सर सैयद डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल was elected as a member of पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। कि इसमें ये है कि सर सैयद अलामा मोहम्मद इकबाल पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर कब बना था? सो इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 1920, 1924, in 1926, in 1930. But the correct answer for this question is C, 1926 में सर सैयद अहमद खान पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का एक प्रॉपर मेंबर बना था, इलेक्ट हुआ था, ठीक है। सो 22 नंबर एमसीक्यू को देखते हैं। नेम द किंग who fall from hers while playing फूलू and died। कि वो कौन सा हुक्मरान था जो फूलू गेम खेलने के दौरान घोड़े से गिर गया था और उसका डेथ हुआ था। सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास, कतबुद्दीन ऐबक है, शाहजहां है, बाबर है, एंड अहमद है। सो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कतबुद्दीन ऐबक जो थे वो फूलू गेम खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर ठीक है उसका डेथ हुआ था। सो दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। When did Parvez Musharraf resign from the president post? When did Parvez Musharraf resign from the post of president? 12 October 2008, 18 August 2008, and 5 July 2005, 10 September 2008। इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 18 अगस्त 2008 में सर सैयद अहमद खान जनरल परवेज मुशर्रफ ने रिजाइन किया था प्रेसिडेंट पोस्ट से, ठीक है। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड लैंड ऑफ ब्रेव पीपल? विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड लैंड ऑफ ब्रेव पीपल? सो बलूचिस्तान है हमारा पास एक ऑप्शन, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है। सो KPK इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी सी नंबर हमारे पास करेक्ट आंसर है। खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पख्तूनख्वा का जो लैंड है इसको द लैंड ऑफ ब्रेव पीपल्स जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। सो where the Saraiki language is more dominantly spoken? Where the Saraiki language is more dominantly spoken? So North Punjab, West Punjab, South Punjab and East Punjab, 4 options हैं हमारे पास, but C number यानी South Punjab is the correct answer for this question. So thank you so much for watching my videos and see you next time in the next lecture. Thank you so much.